Hello everyone, let's start another session from your own channel DH Medico. We'll start with the discussion of reflection of light. So what is the definition is, the traveling back of light in the same medium after it falls on the surface is called as reflection. Next, the angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is the first law of reflection, and second law is that incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane. Okay, this is the second law of reflection. Next is the type of reflection, that is regular and irregular. Regular reflection. When light gets reflected from a smooth surface, it is called regular reflection. On a smooth surface, the parallel light rays have equal angle of incidence. Thus, after reflection, all rays travel in the same direction. So, a parallel beam of incident light remains a parallel beam even after reflection. What does this mean is, see, if the parallel beam is coming like this and they bounce a smooth surface, so the reflected ray is also parallel only. But if this is this is rough surface, and let's suppose this incident rays are coming parallel, but the reflected rays are not parallel. They are not parallel to each other, but they are intersecting. So reflection, after reflection from a rough surface, the reflected rays are not parallel to each other. The example of the smooth surface is plane mirror, flat polished metallic surface, clean top surface of mercury, and surface of still water. Now why still water? Now if the water is turbulent, it will behave as a rough surface. That's what. Next is irregular reflection. Reflection of light from rough surface is called as irregular reflection. Incident rays get reflected in different directions because of rough surface. They are not parallel. Next, what is the example of irregular surface is an etched glass surface. What does etched glass means? See, this is a glass, and some of when the glass is old, like if the sharp substance hits the glass, some of this pieces come out, so that becomes irregular surface, and that is known as etched glass. Unpolished metal or wooden surface and moving water. This one. Next one is first we'll see this. So see, this is regular reflection and this is irregular reflection. This is also known as diffused reflection, like sunlight. Okay. See, laws of reflection. Incident rays and reflected rays behave in predictable way, which leads to two laws of reflection. First, angle of incidence is equal to angle of reflection. Second, incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. See this, lie in the same plane. ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये यहाँ जा रहा है और मतलब इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे स्क्रीन में से बाहर आ जाए. लाइक अगर एक्स वाले प्लेन में है तो एक्स वाले प्लेन में ही होगा ये सब एक्स वाई में, अगर वाई में है तो ऐसे ही होगा. इंसिडेंट रे ऐसी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी. ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसी और ये वाली ऐसी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द प्लेन मिरर. When we stand in the front of a mirror, we can see our image in it. The image is virtual, erect, and laterally inverted. Left side appears right and vice versa. It is of the same size as that of object. The distance of image from mirror is same as the distance of object from the mirror. A person of 6 feet tall can see his full image in a 3 feet tall plane mirror. Now, one important question comes from this line is, see, एक कंसेप्ट याद रखो कि अगर कोई पर्सन किसी भी हाइट का है तो उसको एक साइज ऑफ प्लेन मिरर लगेगी टू फॉर्म हिज फुल इमेज, और उस प्लेन मिरर की हाइट होगी हाइट बाय 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2. जैसे सपोज दिस इज अ पर्सन एंड हिज हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और यहाँ उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर बनानी है, तो मिनिमम कितने सेंटीमीटर का हमें मिरर लगेगा? एंड द आंसर इज कमेंटेड बिलो. द आंसर इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 by 2 is 5. नेक्स्ट,
ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर है. इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते. नेक्स्ट लैटरली इन्वर्टेड, इट मीन्स दैट जैसे कोई ये है, इसके राइट हैंड में ये ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर के बाद वो ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड में हो जाएगा वो. ओके. नेक्स्ट, द इमेज इज इरेक्ट. The size of image is same as object and the distance between image obtained is same as the distance object and mirror. जैसे ये बता रही थी मैं, ये इसका लेफ्ट हैंड है पर ये इसका राइट हैंड होगा और ये सेम हाइट की बनती है इमेज और सेम डिस्टेंस पे बनती है फ्रॉम प्लेन मिरर. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर. नाउ सी सेम साइज, डिस्टेंस भी सेम. ये ए और बी इज इक्वल है, ए और बी इक्वल है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और इसकी हाइट भी सेम है. ये वर्चुअल है, ये इरेक्ट है और लैटरली इन्वर्टेड. इसी इसका लेफ्ट हैंड ऐसे किया इसने और इसका राइट हैंड. ठीक है, ये देखो रेड, यहाँ पे बीच में प्लेन मिरर रखा है. सो रेड हमें ऐसा दिखेगा, लैटरली इन्वर्टेड दिखेगा. मतलब जैसे यहाँ से चालू करना है, लिखना डी, फिर ई, फिर आर, रेड. अगर कोई बोले कि बैट को कैसे लिखोगे, बैट, अगर प्लेन मिरर यहाँ रखा है सो हम ऐसे लिखेंगे. एक मिनट, ऐसे लिखेंगे टी ए और यहाँ पे बी. ठीक है, ऐसे लिखेंगे बैट को. और अगर जैसे बैट है और अगर यहाँ पे मिरर है, नीचे मिरर रखा है तो फिर ऐसे ही होगा. ठीक है, ठीक है. मिरर के इस साइड और उस साइड सिमेट्रिकल होता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द क्वेश्चन कि कहाँ पे मिरर दिया हुआ है एग्जैक्टली. और जैसे हम बहुत बार बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एम्बुलेंस होती है. ठीक है, एम्बुलेंस के ऊपर ऐसा उल्टा लिखा होता है. वाई? बिकॉज जब हम देखते हैं उसे मिरर में तो वो सीधा दिखना चाहिए. सी एम्बुलेंस इज रिटन इन दिस अबव बिकॉज इट अपीयर्स रियर व्यू मिरर in the front can read the right way because the lateral inversion and makes way for it. So ambulance ऐसे लिखा जाता है. Next is, if there are two mirrors making an angle alpha with each other, the number of images is n is equal to. ये बताती हूँ. यहाँ पे देखो, जैसे अगर दो प्लेन मिरर्स रखे, ये एक प्लेन मिरर रखा है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्लियर कि यहाँ पे एक इमेज बनेगी. सो वन प्लेन मिरर अगर है तो जितने ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज बनेगी. यहाँ दो ऑब्जेक्ट है तो दो इमेज बनेगी. सो नंबर, ये नोट कर लो ये वाला पॉइंट. सो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर एक ही प्लेन मिरर है तो. बट एक मिनट, लेट मी रीज इट. बट अगर ऐसा दिया है कि दो प्लेन मिरर है और वो किसी एंगल पे रखे हैं, लेट्स सपोज ये एंगल दिया है हमें 120 डिग्री. हालांकि 120 डिग्री तो नहीं होगा. अच्छा ठीक है, ले लो 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है. ठीक है, हाँ. फिर क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट इसे मिडल में रखा है तो मिडल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. तो ये वाला एंगल देखना है, कितना एंगल है. ये एंगल है 30 डिग्री क्योंकि ये इक्वल डिवाइड किया है. 30 प्लस 30 60. ठीक है, इसलिए एंगल इज 30 डिग्री. तो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इमेजेस इज नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा minus 1. So here the answer is 360 divided by 30 minus 1. इसका आंसर होगा 11.